नमस्ते, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और बुला। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो फिजी एंड फोकस। मैं हूं आप सबकी होस्ट एंड दोस्त शिप्रा शर्मा। हम इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं फ्रॉम अनसीडेड टेरिटरीज ऑफ स्क्वैमिश, केटसी, सिल्वरटूथ एंड मॉस्क्यूम नेशंस। अब हम मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद एंड विद सम वर्ड्स फ्रॉम आवर स्पॉन्सर्स। I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. For any kind of visa-related services, contact Milky Way Immigration, a galaxy of opportunities located at Unit 209-9547 152 Street, Surrey, BC. They have licensed immigration consultants, placement officers, and LMIA experts to meet your immigration and recruitment needs. Book one-time free consultation either on Facebook or by calling 604-396-0005. Bollywood Banquet Hall and Conference Center, located at Pile Business Center at 201-8166 128th Street in Surrey. No celebration is too small to accommodate you. They have newly renovated 2 halls to serve you, up to 1,000 guest capacity, top-notch chefs to delight you with delectable and heavenly cuisine. So just call Bollywood Banquet Hall at 604-598-2700 for your events. Benisi Mobile Detailing Services. They offer commercial trucks, cars, SUV, boats, bikes, RVs, and much more. Just give them a call at 778-808-2859. Just give them a call at 778-808-2859 and they will do all kind of services at your home. Thank you all the sponsors for your support. अब हमारे साथ पूरे हफ्ते भर की फिजी न्यूज़ लेकर आ चुके हैं विक प्रसाद जी। विक प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, फिजी इन फोकस में आपका स्वागत है। यह कार्यक्रम वैनकूवर कनाडा से प्रसारित हो रहा है। फिजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। सस्पेंडेड सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शंस मोहम्मद सनीम और सस्पेंडेड फिजी करेक्शन सर्विस कमिश्नर फ्रांसिस कीन को उनके संबंधित कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रदान किए गए अलाउंसेस को पे किया जाएगा। शुक्रवार दोपहर सुपरवाइजर हाउस में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस कमीशन के बैठक के बाद प्रधानमंत्री सितवेनी रंबुका ने इस निर्णय की घोषणा की है। रंबुका का कहना है कि कमीशन ने रेजोल्यूशन पास किया है और मतदान किया है कि सनीम को उसके कॉन्ट्रैक्ट डेटेड फरवरी 16, 2021 से पे किया जाएगा। सीईओ को उनके खिलाफ दुर्व्यवहार का शिकायत मिलने के बाद इस साल जनवरी में सनीम को निलंबित कर दिया गया था। रंबुका कहते हैं कि 27 सितंबर 2021 से अलाउंस प्रदान किए जाएंगे। इस बीच कमीशन ने सस्पेंडेड कमिश्नर ऑफ पुलिस सितवेनी गिलिहो के खिलाफ दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच के लिए 3 मेंबर ट्राइब्यूनल भी नियुक्त किया है। मिनिस्टर फॉर एम्प्लॉयमेंट अग्निदेव सिंह का कहना है कि फिजी शो के इस इवेंट के लिए वोडाफोन अरेना में सभी अम्यूजमेंट राइड्स को संचालन शुरू करने से पहले ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी सेवा द्वारा प्रमाणित किया जाता है। सिंह की टिप्पणी पिछले हफ्ते की एक घटना के बाद आई है जहां 21 वर्षीय महिला की मृत्यु हो गई थी और 2 अन्य को गंभीर हालत में CWM हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। मंत्री का कहना है कि OHS रिक्वायरमेंट्स के तहत किसी भी अम्यूजमेंट राइड्स की स्थापना से पहले कई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को पूरी तरह से पालन किया जाता है। सिंह ने जनता को आश्वासन दिया है कि किसी भी ऑपरेशन से पहले सभी सवारी पूरी तरह से निरीक्षण और परीक्षण किया जाता है और आगे दोहराया कि नेशनल OHS सर्विसेज द्वारा इसकी जांच की जाती है। मंत्रालय ने घायल राइडर्स और ऑपरेटर्स के साथ कुछ प्रमुख गवाहों का इंटरव्यू लेना अभी बाकी है। सिंह का कहना है कि पूरी जांच शुरू करने से पहले प्रारंभिक जांच अगले सप्ताह की शुरुआत में पूरी होने की उम्मीद है। एक 23 वर्षीय फॉरेन नेशनल को कल ममनुदा वाटर्स में तैरते समय कथित तौर पर डूब गया। पुलिस का कहना है कि घटना के समय पीड़ित दोस्तों के साथ था। पुलिस के एक बयान के अनुसार फैसिलिटी के स्टाफ ने पीड़ित को नांदी हॉस्पिटल ले जाने से पहले उन्हें रिवाइव करने का प्रयास किया, जहां बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस जांच अभी भी जारी है। यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ पैसिफिक वाइस चांसलर और प्रेसिडेंट प्रोफेसर पाल अलवालिया का वेल बैलेंस 2023-2024 बजट की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री सितवेनी रंबुका और उप प्रधानमंत्री और प्रोफेसर बिमन प्रसाद की बधाई दी है। प्रोफेसर अलवालिया ने फिजी के अरियर्स चुकाने के लिए कोलिशन सरकार की कमिटमेंट के लिए अपनी यूनिवर्सिटी की सराहना व्यक्त की है। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी अपने एनुअल कंट्रीब्यूशन के अलावा शुक्रवार को $20 मिलियन की अतिरिक्त घोषणा का स्वागत करता है।
वाइस चांसलर का कहना है कि इस वर्ष की शुरुआत में $10 मिलियन ने बहुत फाइनेंशियल रिलीफ प्रदान किया है और इसके उपयोग उनके कर्मचारियों को समर्थन करने के लिए, उन्हें अपने मेंटेनेंस करने के लिए सक्षम बनाने के लिए, क्वालिटी स्टूडेंट एक्सपीरियंस प्रदान करने में भी योगदान प्रदान करेगा। यूएसपी वाइस चांसलर ने एजुकेशन सेक्टर के लिए बजट एलोकेशन को बढ़ाकर $845 मिलियन करने के लिए फिजी सरकार को भी सराहना किया है, जिसमें 505.4 मिलियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को प्रदान किए गए, जो इस बजट के तहत किसी भी क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा एलोकेशन है। उनका कहना है कि शिक्षा एक महान स्तर है और समानता प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन है और यह बजट उस संबंध में हमारे समुदाय के लिए अवसर प्रदान करने के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प का एक प्रमाण है। आप देख रहे फिजी इन फोकस। अब कुछ स्थानीय समाचार। पुलिस के साथ इंटरेक्शन के दौरान शुक्रवार रात एक व्यक्ति की मौत के बाद इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को बीसी के सरी में बुलाया गया। सरी के आरसीएमपी का कहना है कि अधिकारियों को शाम करीब 7:30 बजे विलब्रुक शॉपिंग सेंटर के पास फ्रेजर हाईवे पर एक व्यक्ति के ट्रैफिक के बीच अंदर और बाहर जाने की सूचना मिली। पुलिस का कहना है कि वो व्यक्ति मेडिकल डिस्ट्रेस में पाया गया था। शनिवार दोपहर एक बयान में इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को कहना है कि जब ऑफिसर्स घटनास्थल पर पहुंचे तो बताया गया कि उन्होंने उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया और उसके तुरंत बाद वो मेडिकल डिस्ट्रेस में पड़ गया। माउंटीज का कहना है कि उस व्यक्ति को पुलिस एम्बुलेंस पर्सनल से मेडिकल ट्रीटमेंट मिला और उसे घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया था। सरी आरसीएमपी का कहना है कि चूंकि फाइल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस द्वारा अपने कब्जे में ले ली गई है, इसलिए वह कोई भी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिस अब घटना की जानकारी या फुटेज वाले किसी भी व्यक्ति को विटनेस लाइन 1855-446-8477 पर संपर्क करने के लिए कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि फेडरल गवर्नमेंट ब्रिटिश कोलंबिया पोर्ट स्ट्राइक को समाप्त करने के लिए दोनों पक्षों पर दबाव डालना जारी रखेगी। ट्रूडो, जो कैलगरी में है, ने कहा है कि उन्हें पता है कि प्रेरीज में उत्पादों और हड़ताल कितनी प्रभावशाली हो रही है। इंटरनेशनल लॉन्गशो और वेयरहाउस यूनियन कनाडा के लगभग 7400 सदस्यों ने शनिवार को बीसी के लगभग 30 पोर्ट्स पर काम छोड़कर या काम बंद कर दिया है। सोमवार को बातचीत से कुछ सुलझना या कोई संकेत नहीं मिल रहा है। अल्बर्टा प्रीमियर डेनियल स्मिथ ने शुक्रवार को कहा है कि पोर्ट स्ट्राइक उनके प्रांत के उत्पादों और निर्यातों के लिए अत्यधिक कठिनाई पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने ट्रूडो को पत्र लिखकर हड़ताल खत्म करने के लिए संसद को वापस बुलाने के लिए कहा है। इसमें कहा है कि स्ट्राइक में संभावित रूप से $4.6 बिलियन मूल्य की बाधित होता है। आप देख रहे फिजी इन फोकस। अब कुछ खेलकूद के जगत से जानकारी। डिजिटल प्रीमियर लीग के अंतर्गत राउंड 11 का खेल समाप्त हो चुका है। पहला मैच में लोटोका का भिड़ंत लंबासा से हुआ, जिसमें लोटोका ने लंबासा को 1-0 से पराजित किया। लोटोका की ओर से सैरूसी नवलुम्बू ने गोल बनाया। तालुवु नितसिरी और ताबुआ के बीच में जो खेल हुआ, उसमें तालुवु नितसिरी की जीत ताबुआ से 1-0 से हुआ। तालुवु नितसिरी की ओर से रोहन लाल ने गोल बनाते हुए उन्हें जीत दिलाई। उधर नावुआ और बा के बीच में जो खेल हुआ, उसमें नावुआ की जीत बा से 2-1 से हुआ। बा की ओर से निकी राज ने पहले गोल बनाते हुए बा को 1-0 से ऊपर कर दिया। जोने नारांबा ने नावुआ की ओर से खेल को बराबर किया और विनिंग गोल आरामी मनुबाई ने बनाते हुए नावुआ को 2-1 से जीत दिला दी। रेवा की हार सुवा से 1-0 से हुआ। सुवा की ओर से कवैया रवांगा ने गोल बनाया। अगर पॉइंट्स टेबल की ओर हम देखते हैं तो 11 मैचेस के बाद में लोटोका नंबर 1 पोजीशन पर है 25 पॉइंट्स को लेकर। रेवा के पास 23 पॉइंट्स है। सुवा के पास 21 पॉइंट्स है। नांदी 21 पॉइंट्स पर है। लंबासा 18 पॉइंट्स पर है। तालुवु नितसिरी 13 पॉइंट्स पर है। बा 12 पॉइंट्स पर है। नावुआ के पास 12 पॉइंट्स है। नांडोंगा के पास 6 पॉइंट्स है और ताबुआ के पास 4 पॉइंट है, जो सबसे नीचे है। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाजत। धन्यवाद। धन्यवाद विक प्रसाद जी। अगर आपके पास भी कोई भी न्यूज़ है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप विक जी को कॉल कर सकते हैं। उनका नंबर जो है, आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं और उन्हें इन्फॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास कुछ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स भी हैं, चलिए सुनते हैं। प्लीज़ अपना पेन और पेपर रेडी रखिए टू गेट दीज अनाउंसमेंट्स। खालसा रीयूनियन 2023 ये होने जा रहा है फिजी ऑन जुलाई 29, 2023 एट
Khatri Hall in BA Fiji, and there are only limited tickets. हर बार की तरह बहुत limited tickets हैं and जो बहुत कम रह गई हैं इस event के लिए, so जल्दी अपनी ticket book कर लीजिए. और ज़्यादा जानकारी के लिए आप BG पेज पे FB पेज पे जाके खालसा BA Fiji Reunion 2023 के खालसा FB पेज पे जा सकते हैं. Mushtari Begum Festival of Indian Classic Music and Dance is on September 3rd, 2023 at 7 p.m. at Messi Theatre. For tickets and more information, please call at 604-521-5050 or ticketshaw.ca. The theme is when your ear begins to see and the eyes listen. So अब हमारे पास कुछ community highlights भी हैं. चलिए देखते हैं. Fiji in Focus is on location or on grounds at Investment Fiji. And the gentleman that I'm going to introduce to you, he is the CEO of Investment Fiji. He's a very busy man, meetings all day, but he has spared a few minutes to talk to the people in Canada about investing in Fiji. So thank you so much, Mr. Chetty, for giving us a few minutes of your time to talk to the listeners or the people that are watching us in North America and in Canada. So my first question will be, how is Fiji doing? First of all, thank you very much for seeing us. It's a pleasure to always, connect to people that have Fiji at their heart. And that's what we do at Investment Fiji. We basically, before I go into the economy, let me introduce you to who we are, Okay. As an organization. So we are basically an investment and trade promotion agency responsible for attracting investment in Fiji, facilitating both foreign and local investment. Our new mandate is also to look after our exporters, to take products overseas. We're in fact planning a mission to Canada, North America, also US, but we have shifted it to later during the year. So hopefully we can come down and talk about more opportunities and potential about Fiji. But going back to your question, Fiji in fact is doing very well after COVID. We are one of the countries that have recovered very well. COVID did have a huge impact on the economy because of our environmental tourism. And after that, we have recovered really well. If you look at our tourism figures, have been doing phenomenally well. And at the same time, we open new markets like Canada. We're not flying there, Fiji is going there. Yes. So the tourism recovery as a sector has been doing very well. The economy initially was projected to grow at about 6%, projected up now to grow at 8%, and pretty doing well. I think one of the best performing, economies in this region at the moment. Obviously, we haven't reached pre-pandemic levels for the size of the economy, but we've reached in terms of almost there with tourism. So we, from where I sit, we see investment activities also picking up in the country, and it's at a modest pace, but we think in future, the future looks very bright for us. I was going to ask you then, the people that are watching me in Vancouver or in North America, if they have few dollars parked in the bank or something and they want to invest in Fiji, and some of them, even my own friends, they have bought land in here and they want to build Airbnb, motels, come here for vacation, rent it out during the time when they are not here. So can you name few of the like Kava, and we have a direct flight, you are right, about YVR 290. What are some, just very few, that people that want to park their money or invest in Fiji, what would that be in a layman's language? In Fiji, there's obviously, as the economy is growing, there's a lot of opportunities, big opportunities and small opportunities that have come in. And for former Fiji citizens or people that have links to Fiji, we encourage them to come back and invest. In fact, the environment is very good. There's a lot of incentives and support by the government. We are here to support you. So some of the opportunities we see, so I'll divide it into export side of things and maybe investment side of things. In terms of investment, we see the tourism sector not slowing down. So any opportunities, currently if you look at Fiji, we have shortage of accommodation. Yes. We need 4,000 to 5,000 new rooms. Yeah. So any investment around this space is very important. And also adding new activities too. So when people come, we want them to spend in Fiji. Yeah. Currently they are averaging around 9 to 10 days to stay. So we want to expand that. We want to increase that. So any activities around tourism, within tourism, there's new things that have come up like medical tourism,
sports tourism, spa tourism. There's so many other opportunities that we can look at where Fiji can be doing really well. And in fact, we see those coming back and doing well. So I think that's on tourism. If you look at agriculture, we haven't really invested well in agriculture as a country. So in fact, if you've got a farm, I'll tell you one example. The tourism sector imports about 74 million fruit and vegetables every year. Out of that, 30 million can be grown in country. So you've got an existing market. How do you reach to them? The quality and consistency. If you do it well, there's all these existing markets. Now I talk to a lot of retail people. They're importing a lot of things. They said, we can help Fiji grow if they can do it here. Like yesterday I was in meeting with Roops. So Roops import a lot of things from globally. Yeah. So one of the things they mentioned to us, like, if you look at simple things, like things made out of the rolling pin, the wood stuff, nobody in Fiji is making it. They can buy from them. So all those opportunities are also there because of our increase in economic activity in the country. So agriculture, healthcare, even in manufacturing, there's a lot of opportunities in Fiji that you can tap into. So manufacturing, for example, adding these successful cases like Pure Fiji, Fiji water. There's so many of them so we've got some of the products like ginger, turmeric. You can turn them into some very good international product, including car. The budget in a fully democratic environment, in a democratic nation, is a central political and economic process. Because the budget invites a lot of debate, a discussion, not only after its announcement, but leading up to the announcement. And as a government, we have made sure that before the formulation of the budget, we have extensive dialogue and discussion on the prospects, the problems, and possible budgetary measures to address them. Of course, as part of the philosophy of the new government, we believe in openness, consultation, dialogue, and the ability of our people to engage with the government in a direct and an open manner. So we started the process by convening a highly successful National Economic Summit, and that too after absence of several years, or should I say many years. Following that, we also appointed a fiscal review committee, a very important committee. The last time the committee was appointed was in 2004. And the idea of the committee was to ask the committee to independently look at the details of our fiscal position, expenditure, revenue, tax policies. And I can tell you, whether we've taken all the recommendations on board or not, regardless of that, that document was a very, very well prepared, a thorough document, a document based on analysis of real data, and a document which provided us as people in the Ministry of Finance, as politicians, the flashpoints, places where we ought to look at whether it was expenditure, tax, or revenue, and provided us a very important avenue for looking at the choices that we had in the formulation of the budget. I know the chairman and members of the committee, invited a lot of flack, and that was expected. That was good. We appreciated some of those criticisms of the Fiscal Review Committee.
But this was a group, and I want to thank all of them that came out willing to help, spending a lot of time, personal time, to do the report. And that showed, and that sort of reaffirmed our belief that there are so many people out there outside of government. There is so much knowledge and wisdom that resides outside of government, in the academia, amongst the researchers, amongst the professionals, NGOs, that governments always must ensure to listen to, including our business and community and the private sector. And we've benefited immensely from that dialogue, that understanding, and those reports. The World Bank report again was very clear. In fact, we appreciate the frank, shouldn't use the word frank, maybe clear views about the state of the economy. And we appreciated improving the road network and water infrastructure. Of course, there is emphasis on cost efficiency, with pursuit of efficiency improvements, cost containment, and enhancing productivity, which also Minister also talked about this. And of course, there's real focus on rebuilding resilience and buffer in the state balance sheet in order to safeguard against impending shocks. A very important point that needs to be taken into consideration as far as reining in your deficit is concerned is because you need to prepare for shocks. Because if a shock eventuates, then you need to have the leverage in your balance sheet to borrow. Next is, in terms of the strategic focus, from my assessment, is targeted support to the needy and vulnerable, because there is increment in the social protection program offered by government, ranging from social pension scheme, family assistance scheme, and the allowances. This underscores government priority towards the marginalized segment of the population. And of course, there is VAT exemption for the 22 essential items. The third area of focus is to reinvigorate the private sector investment. This is key. In terms of the key engines for growth, it's very important to take that into consideration. It's public investment, private consumption, and exports. So these are critical. So there is a set allocation towards the ease of doing business initiative. Investment Facilitation Committee has been instituted, which is tasked to resolve issues that impede investment and business activities. And of course, in the budget supplement, it is highlighted this plan to restructure the incentive regime for the BPO sector. This is a very high-yielding sector, both from a income generation perspective and also from a return on investment perspective. And of course, there's expansion of weedicide and fertilizer subsidy for non-sugar crops, which aims to boost agricultural production. A key point I want to emphasize here, going forward, it is critical that the government needs to double its effort to ensure the structural impediments encountered by the private sector needs to be addressed. On this point, it is also important to identify the linkages between the tourism sector and the agriculture sector, especially the untapped demand for agricultural produce in the tourism sector. My next slide is on de-risking state balance sheet. Government plans to invest in disaster insurance. Tropical cyclone and flood poses the largest threat to Fiji. Parametric insurance provides a quick payout to facilitate a rapid response to a disaster event with full flexibility on how the payout can be used. This builds the country's financial resilience against disaster events as part of its comprehensive disaster risk financing strategy. And the company which I work for is Pacific Catastrophe Risk Insurance Company. We focus on sovereign insurance. And of course, I've got my colleague here, Pranil Putesh, who works for PCAP, and their focus is on the micro and the macro segment of the parametric insurance market. Now, let me touch on the public sector debt dynamics. हमारे पास इतना ही समय था. अब हमारे पास
आप सब हमारे पास इतना ही समय था, अब आप सबसे विदाई लेने का समय आ गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे इस शो के साथ जुड़े रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिजियन फोकस के साथ हमेशा जुड़े रहिए। इस शो को आप फिर से देख सकते हैं एवरी थर्सडे एट 2:30 p.m. and on Sundays at 4 p.m. Vancouver time on Channel 4 and in Calgary at 5 p.m. on Channel 10. आप लोग YouTube चैनल पर भी फिजियन फोकस को देख सकते हैं। प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर। फिजियन फोकस ब्रिंग्स 3 other shows आपके लिए लेकर आते हैं। एशियन पल्स TV on every Wednesday at 1:30 p.m., Thursday at 8:30 p.m. and Saturdays at 5:30 p.m. और कमेला सिंह टॉक शो every Monday at 10 a.m. and Sunday at 5:30 p.m. with the Vibes TV on Thursday at 10 p.m. and Sundays at 4:30 p.m. Please watch all your shows. अब हमारे पास जो है जाने का समय आ गया है। आपको हमारी मुलाकात होगी ट्यूसडे को नेक्स्ट 10 p.m. only on Shaw. हम सभी आपको शुक्रिया करते हैं. Keep watching our show. Thank you. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. For any kind of visa-related services, contact Milky Way Immigration, a galaxy of opportunities located at Unit 209-9547 152 Street, Surrey, BC. They have licensed immigration consultants, placement officers, and LMIA experts to meet your immigration and recruitment needs. Book one-time free consultation either on Facebook or by calling 604-396-0005.